Hello, Assalamualaikum friends. Shameela. We are here for your English class. Miss Shameela is here and she will start her lecture. Miss Shameela, can we start now? Yes, sir. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, everyone else. I hope that everybody is fine by the grace of Allah Almighty. So today we are going to start another poem that is The Twice, and which is written Conventry Petmore. As you will see, the title is written over there, appreciation. So here what we are going to discuss about the appreciation regarding the toy or regarding the boy or a father, what we are going to discuss about it. Let me see. Slide. Next slide. Yes. Here is the background has been given of the poem and the poet. So let me see that what it has been written. The Twice was written in the 19th century by the Victorian poet Coventry Petmore. He was one of the least known poets from the Victorian period. Nobody was known him, and but after the death of his first wife, the grief of loss became an important theme of his work. In this poem, Petmore also uses this theme in the line his mother, who was patient, being dead. Here the poet alludes to the death of his wife. Besides, he describes one incident that injects pathos into his heart, his child's sadness made him realize the fact that he had also committed mistakes by not obeying his divine Father, God. He wished that God might forgive the childishness of humankind. So, here, what we are going to discuss, the poet is having a different experience as soon his wife has been died, and then he doesn't have any idea how to treat with the children. So one of the child or a boy he was talking about in this poem, which we are going to discuss about it furthermore. Even though how do we have to give the love, unlimited love, obviously, as it is written about the mother. When the mother has been died, so how it can be possible that the father has given the complete love to a child? ये बहुत ज्यादा difficult होता है. और जब मदर तो बच्चे की हर बात जानती है and then she ignore each and everything of a child. But on the other hand, अगर father को उसकी take care करनी पड़ जाए, so that we will have to see that how much aggressive the father is. और ये कि अगर aggressive नहीं भी होते हैं, that again and again if the children are doing the or repeating the same mistake, so what would be the reaction of father rather than the mother, and especially those who doesn't have any mother, died early when they are having not this young enough, so that the reaction can be changed of the father. So this is one of the poem where which we are going to discuss about it, कि फादर का क्या रिएक्शन था, बच्चे का फिर ऑन दी अदर एंड क्या रिएक्शन था, और फिर वही वाली बात आ जाती है कि अल्लाह अलमाइटी क्या कहता है हमें इस बारे में, दैट हाउ टू ट्रीट द चिल्ड्रन एंड हाउ टू लिसन देम, हाउ टू अंडरस्टैंड देम. So each and everything regarding this we are going to discuss in this poem. So next slide. Okay. Here, first of all, we are going to discuss about the outline. Introduction we will discuss, and child disobedience. ऐसी क्या वजह थी जो वो अपने father का कहना उसने नहीं माना, and then we will have to see the father regrets the twice. God is merciful. Conclusion is you do remember that obviously child word आ जाता है तो child are playing with the toys. और कोई भी ऐसा parents नहीं होगा कि कोई अपने बच्चों को toys ना ला के देता हो. Obviously when the children are there, so that they will have to play with the toys. Now let me see introduction. All right, now we are on the introduction of the poem. So that introduction of the poem, what it has been written, that the Twice is one of the most beautiful poem written by Coventry Patman. He was born in London 1823. He associates his poem with the everyday happenings of life and has a deep concern of religion. His publications are The Angel, The House, The Unknown Eros, The Other Odes,
Petmore died in 1896. It is all about the toys that he has told that this is one of the best poem forever, and it has written by the Petmore, as he has born in 1823. And then why he was too much religious, because as you do remember, he was in grief जब वो बहुत ज़्यादा टूट गया था, his wife has been died, so that he was very touchy about the religion. His publications are The Angel in the House. उसकी publication में जो है हमारे पास एक book है The Angel in the House, as well as The Unknown Arrows and the Other Odes. Petmore died in 1896. The poem The Twice is highly religious. The poem relates the story of a father and a son. Father treats his son harshly, but later realizes his mistake and asks God to forgive him for his foolish behavior. अब जो हम इस poem के बारे में पढ़ना जा रहे हैं, तो it is totally depend on the highly religious point of view. So how do we have to treat the children? On the other hand, the poem relates the story of the father and son. Obviously, this is totally based on mother को तो उन्होंने पहले ही ज़ाहिरी बातें नहीं है वो, so that this story is based on father as well as son. And then it is also treated that how the father's reaction when the children or the child is doing something wrong or the misbehave with the child. So it is written over there, God to forgive him for his foolish behavior, who we are, that we are not going to forgive anyone else. When the God has going to, or for God just forgive us, so why not we people are forgiving anyone else? So next slide. All right, here now we will have to see in the stanzas child disobedience. कि फादर का तो जो भी रिएक्शन था, बट व्हाट इज द कंडीशन एट दैट टाइम, ऐसा क्यों हुआ, फादर के जो बिहेवियर है उसमें क्यों इतनी जल्दी चेंजेस आए. So let me see, the poet tells us how he punished his son for disobedience, and the child acted and talked just like a grow up a man. तो जब उसने देखा कि देख वो मेरे बेटे का बिहेवियर ठीक नहीं है, तो एज अ पनिशमेंट उसने क्या किया, इस बारे में हम पढ़ेंगे. एंड हिज रिएक्शन ऑन द अदर हैंड, चाइल्ड का जो रिएक्शन था, ही वाज जस्ट बिहेविंग लाइक अ ग्रोन मैन, जैसे कि वो बहुत बड़ा हो गया हो. ही मेड नो आइज हिज फादर आस्क्ड हिम टू कीप क्वाइट, बट हिज सन डिड नॉट ओबे हिम. At seventh time, the father punished his son and sent him away without the usual kisses, and the child was much grieved. He left his father and went to bed. तो फादर जो था उसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह उसने नहीं ट्रीट किया. उसे बहुत गुस्सा आया कि ये 7वीं दफा इसने मेरे साथ बदतमीजी की है, और वो फिर उसे उस तरीके से प्यार भी नहीं करता जिस तरह नॉर्मल वो उसे लाइक करता था. और इसी गम में क्या करता है बच्चा, वो छोड़ के चला जाता है और अपने रूम में जाके बेड पे लेट जाता है. उसके बाद फादर की जो कंडीशन होती है, द फादर रिग्रेट्स. आफ्टर सम टाइम द पोएट रियलाइज दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक. As his son was lonely since his mother has died, he feared that the child might not be able to sleep due to his grief. ऐसे ही होता है कि पोएट ने यहाँ पे हमारी अटेंशन डाइवर्ट की है कि जब जाहिर बात है उस बच्चे की मदर इस दुनिया में नहीं रही, तो हो सकता है वो अकेले में डरता हो, रोता हो, उसकी कंडीशन ठीक ना हो, वो गम में हो, वो हर वक्त माँ को याद करता हो. He went to his bedside, but he found the child asleep. His eyelids were swollen due to sweeping. His eyes lashes were still wet with the drop of tear. तो यहाँ पे ये चीज रियलाइज कराई गई है कि ये भी पॉसिबल है कि जब वो फादर जो है वो उसकी बेड की तरफ जाते हैं, वो उसे देखते हैं कि वो अब गहरी नींद तो सोया हुआ है, लेकिन उसकी आंखें जो है बहुत ज्यादा स्वाइल अप हुई हैं. इट मीन्स कि वो काफी देर तक रोया है. उसकी लैशेस जो है वो भी काफी गीली हो रही हैं, और उसके जो आंखों के आंसू थे वो भी बाहर नजर आ रहे हैं. नेक्स्ट. उसके बाद यहाँ पे हम टॉय की बात करेंगे कि क्या होता है. द फादर बिकेम मोर इमोशनल व्हेन ही फाउंड दैट हिज सन हैड वेरी नीटली अरेंज्ड सम पीसेस ऑफ ग्लास, a red band stone, some shells and bottle of blue gas and two French copper coins on the table. अब वो फादर की जो कंडीशन होती है इस रिएक्शन के बाद, तो वो काफी इमोशनल हो जाता है. एंड देन ही हैज फाउंड ऑन द साइड ऑफ द बेड ये पीस ऑफ ग्लास रखा हुआ है, रेड मैन स्पून रखे हुए हैं, उसके पास शेल्स हैं, कुछ बोटल्स हैं जिसमें ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं, और कुछ फ्रेंच क्वाइंस हैं. दे वर सिंपल बट इनफ टू कंफर्ट हिम. लेकिन उसको जाहिर बात है चाइल्ड है, लेकिन उसके लिए खिलौने
काफी है, वो इनसे खेलते ही नोटिस दैट द बॉय हैड sought consolation in small ordinary objects to confront his sad heart. It was a touching scene for the father whose wife was dead and there was no one to console the child. He felt sorry for his attitude. The father bent over the child and kissed away the tears from the boy's cheeks, but tears from his own eyes dropped on his son's face. वो जब ये सारी चीजें देखता है तो वो बड़ा मायूस होता है, बड़ा परेशान होता है कि ये मैंने मतलब अपने बच्चे के साथ क्या किया, और ये तो बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है, ये आज है ये कल नहीं है, और इस बच्चे की ये तो माँ भी नहीं है अब जिंदा, और आगे से मैंने भी इस बच्चे के साथ ऐसा बिहेवियर किया, तो उसको शर्मिंदगी होती है अपने बिहेवियर के कि मैंने अपने मतलब बच्चे के साथ ऐसा बिहेवियर क्यों शो किया। उसके बाद वो क्या करता है, अपने आप को मतलब बैठता है वो बच्चे के पास और उसको प्यार करता है, और उसकी आंखों से टीयर्स जो है वो जारी हो जाते हैं, जो कि उसके चीक्स पे गिरते हैं, बट टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आईज ड्रॉप्ड ऑन हिज सन्स फेस। ठीक है, उसकी आंखों से जो निकले हुए आंसू होते हैं वो उस बच्चे के फेस पे जाके गिर जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जिक्र करेंगे गॉड इज मर्सीफुल। जैसा कि नॉर्मल रूटीन में भी आपने देखा होगा कि हम कितना ही कुछ कर लेंगे, इन दो के हम तो भूल के बैठे हुए, वी आर नॉट जस्ट रिमेम्बर द गॉड, हम उसके लिए कर क्या रहे हैं, बट ही ऑलवेज रिमेम्बर अस, वो हमारी छोटी छोटी गलतियों को भी माफ कर देता है। So in this poem, the poet points out that God is always kind and merciful to man, but man often fails to follow the commands of his creator. एक इंसान जो है वो तो हमेशा भूल जाता है कि अल्लाह ताला को उस पर कितना खास करम है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला जो हमारा क्रिएटर है वो कभी भी नहीं भूलता, और वो हमें देता ही आया है और माफ करता ही आया है। He provides men with all the simple joys of life, yet there are some who do not fear God even on their deathbed. यहाँ पे अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिंपल लाइफ गुजार रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड दे आर नॉट फियरिंग अबाउट द गॉड। God knows that though we had been disobeying his commands and enjoying ourselves with worldly things, yet he forgives us. अल्लाह ताला जानता है कि मतलब हम लोग डिसोबे कर रहे हैं, हम उसकी बातें नहीं मान रहे हैं अकॉर्डिंग टू वो हमसे जो चाहता है, हम उस तरीके से इबादत भी नहीं कर रहे हैं, हम बिहेव नहीं कर रहे लोगों के साथ वैसा, लेकिन उसके बावजूद वो हर चीज को भुला के हमें नवाजता है। तो ये सारी पोएम वी विल हैव टू डिस्कस ऑल अबाउट रिगार्डिंग दिस के किस तरीके से ही शुड हैव टू बिहेव विद द चाइल्ड। नाउ नेक्स्ट, and the father hopes that as he forgiven his son would pardon him for his childishness. He prayed all night with the feeling that God is merciful and he would forgive him. फिर एंड में क्या होगा इस पोएम के कि भाई वो फादर जो है वो मतलब अपने आप माफी मांगने शुरू कर देगा, दुआ करना शुरू कर देगा पूरी रात अपने बेटे के लिए, और ये उम्मीद भी रखेगा कि अल्लाह ताला बड़ा मर्सीफुल है, सो दैट ही विल आल्सो फॉरगिव मी। अब हमें मोरल क्या मिलेगा इस पोएम से, दैट ही एज द सेइंग गोज द एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, वी शुड फॉरगिव द मिस्टेक्स ऑफ पीपल एंड लिव फ्रेंडली विद ऑल। God is merciful on us and he forgives those people who forgive the mistakes of human being. अल्लाह ताला हमेशा उन लोगों को पसंद करता है जो कि दूसरे लोगों को माफ कर देते हैं और उनसे दोस्ती कर लेते हैं और उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं, so that Allah Almighty like these type of things. Now we are going to start our poem stanza by stanza, and let we learn about it, that what the child has done, and then what would be the rhyming scheme, and then how many lines it has been divided, so that stanza by stanza we are going to learn it. Next. Okay, here you will see that my little son who looked from the thoughtful eyes and moved and spoke in quiet grown up voice. Having my law the seventh time disobeyed, I struck him and dismissed with hard words and unkissed his mother who was patient being dead. So what we are going to discuss over there, you will see that my little son who looked from thoughtful eyes, कि मतलब उस बच्चे के जहन में पता नहीं क्या क्या ख्याल आते हैं, he was in deep thought and moved and spoke in a quiet grown up voice, वो बड़ों वाली आवाज में बोलता है जैसे एक छोटा बच्चा कोई समझदारी की बात नहीं करता। Having my law the seven time disobeyed, लेकिन उसका फादर का कहना ये होता है कि 7 टाइम तुमने मुझसे बदतमीजी की है। I
स्ट्रक हिम, उसका फादर क्या करता है, उसे मारता है। स्ट्रक इन द डजंट मीन दैट कि वो उसकी बॉडी को टच कर रहा है और मार रहा है। हार्श वर्ड ही वाज यूजिंग एंड डिसमिस्ड विद हार्ड वर्ड्स एंड अनकिस, उसे वो लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता, प्यार नहीं करता और उसे वहां जाने का बोल देता है। हिज मदर हु वाज पेशेंट, जो कि पहले से बहुत बीमार थी, बीइंग डेड, उस लड़के की जो मदर है वो ऑलरेडी मतलब डेथ हो चुकी है उनकी। अब यहाँ पे ये जो कमेंट्री पॉइंट्स हैं, दैट ट्वाइस बिगिन विद रेफरेंस टू हिज सन, पेटमोर कैपिटलाइजेस द फर्स्ट लेटर ऑफ सन फॉर द सेक ऑफ एम्फसाइजेस। अब यहाँ पे उसने जिस लेटर पे जोर दिया है वो बेसिकली है सन। राइटर ने यहाँ पे बेटे का वर्ड जो यूज किया है, सन फॉर द सेक ऑफ एम्फसाइज, यहाँ पे आपको गौर करना है। द चाइल्ड लुक्ड एट हिज फादर विथ थॉटफुल आईज, यानी कि वो सोचते हुए, कुछ देखते हुए कि ये मेरा फादर है। ठीक है। ही मूव्ड एंड स्पोक क्वाइटली, वो जाता है और धीरे से बोलता है, लिसनिंग टू हिम इट अपीयर टू द स्पीकर दैट ही हैड ग्रोन अप एंड बिकेम वॉइस। फ्रॉम द फ्रेज ग्रोन अप वॉइस इट बिकेम्स क्लियर दैट द स्पीकर वाज एंग्री विद हिज सन। उसे ये बात भी बुरी लगती है कि अभी ये एक छोटा है और मुझसे किस तरीके से आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, जैसे कि कोई बड़ा मुझसे बात कर रहा हो। और ये चीज उसे बहुत बुरी लगती है और उसे गुस्सा आता है अपने बेटे पे। The following line describes why he was angry. His son disobeyed him for the seventh time. तो उसने कहा कि ये मुझ पर गुस्सा क्यों करते हैं, और उसने 7 टाइम जो है मतलब उसको इग्नोर किया। 7 टाइम जो था उसको ये चीज लगी कि भाई इसकी तो आदतें बिगड़ती जा रही हैं और ये मुझे पे अब इस तरीके से मिसबिहेवियर करता है। He thought the boy might have become wise to not follow his order, so he rebuked him and refused to give him a kiss before he went to sleep. So that the father was thinking about that he is not behaving me in a proper way, so that he would give him a kiss and he has given the order to him that you will go and sleep. Petmore uses the term struck in order to reflect the impact of his words and rudeness on his son's mind. अब यहाँ पे क्या बिहेवियर है उनका स्ट्रक का, कि दैट इज अ वेरी हैवी वर्ड और दी इट हैज बीन इम्पैक्ट। he is not talking to him in a polite way, he was totally rude from his son. Okay, son's mind, he did not beat him but he struck him, उसने कोई ऐसा मारा पीटा नहीं है, लेकिन उसने जो वर्ड, फादर ने जो अपने बेटे के लिए वर्ड यूज किए हैं, दैट इज बेसिकली वेरी वेरी हार्श, जिससे उस बच्चे का दिल टूट जाता है। बिसाइड्स हिज मदर वाज नो मोर, और अब उसकी मदर भी नहीं है कि जिनके पास जाके वो ये डिस्कस कर लेगा या वो रो लेगा। सो देयर वाज नन टू कंफर्ट हिज एक्सेप्ट हिज फादर, उसके पास तो जो कंफर्ट जोन थी वो उसके फादर ही थे और कोई भी नहीं था। नेक्स्ट स्लाइड। Okay, now here, then fearing lest his grief should hinder sleep, I visited his bed, but found him slumbering deep with darkened eyelids and their lashes yet from his late sobbing weight. Here, what the speaker is discussing about, that being aware that his father was sleeping, that he could not sleep, वो सही से सो ही नहीं पाया, because of the pain he inflicted on his heart, यानी कि उसको इतना पेन हो रहा था, उसने इतना असर लिया था इस बात का अपने दिल पे कि that could be a very painful for him. So he went to his room and found that he was already asleep. वो उसके रूम में जाता है, जब वो उसके रूम में जाता है तो वो क्या फाइंड आउट करता है कि वो जो है उसका बेटा जो है वो ऑलरेडी सो रहा है। He was slumbering deep for his mental weariness after being rudely treated by his father. और वो नोट करता है अपने बेटे को कि वो बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो रहा है और इसके बाद जो है मतलब weariness after being rudely treated by his father, वो फील करता है कि आज जो मैंने अपने बेटे के साथ बिहेवियर किया, it was totally wrong. His eyes had become dark from sobbing and his eyelashes were still red. The image of his son invoked a sense of guilt in his heart. Besides, Petmore makes use of organic imagery in order to convey the internal feelings of the father and son.
मोबाइल लेके आओ अंदर से. So here we are talking about that when he went over there and he has found that his son was sleeping, but he has realizing that he didn't sleep in a proper way. A lot of time he was just crying because he has seen the physical appearance of his child, that the eyelashes were wet enough, and then his eyelids also, there are the swelling over there. So in this way he has realized that कि मेरा बेटा काफी देर तक रोता रहा है, and then finally he has in a slumber sleep, in a deep sleep. Next. डेटा नहीं चल रहा मोबाइल. All right, now here we are going to discuss about another stanza. And I, with moan, kissing away his tears, left others of my own. For on a table drawn beside his head, he had put within his reach a box of counters and a red van, stone, a piece of glass upbraided by the beach, and 6 or 7 shells, a bottle of with blue bells, and 2 French copper coins, ranged there with careful art, to comfort his sad heart. यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है? That he was talking about the toys of a child. The darkened eyelid of the boy made the father so sad that he could not help but cry aloud. And he kissed on his wet cheek, then left his face. In this way, the poet describes the soft side of the father's heart. अब उसे बहुत परेशानी होती है कि मैंने अपने बेटे के साथ ये क्या किया. उसे बहुत अफसोस भी होता है. फिर वो अपने बेटे को प्यार करता है उसके चीक्स पे. और फिर क्या होता है? इन दिस वे द पोएट डिस्क्राइब द सॉफ्ट साइड ऑफ द फादर्स हार्ट. यानी कि वो यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि अगर उसने एक टाइम में उसे डांटा, बट लेटर ऑन ही हैज रियलाइज कि मैंने ये काम गलत किया. He indeed reacted cruelly, yet the commiserated with his son. The realization of his mistake made him return the kiss which refused to give. जब उसे इस बात की रियलाइजेशन हुई कि मैंने गलत किया, तो इस चीज ने उसे मजबूर कर दिया कि वो अपने बेटे को प्यार करे. नेक्स्ट. Okay, in the following lines, reader find a number of toys that the boy treasured. There was a table near his head. He had put several objects and collected on the table. There was a box of counters, red wine stone, piece of abraded glass, some shells, a bottle with bluebells flowers and the French copper coins. अब उसके बराबर में जो टेबल होती है उसमें कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए होते हैं. दैट इज कॉल्ड टॉयज. टॉयज रखे हुए होते हैं. और फिर वो क्या करता है, वो टॉयज उनमें से कौन कौन से होते हैं? कोई बॉक्स होता है काउंटर का, कोई रेड में स्टून्स होते हैं, इसके अलावा पीसेस ऑफ ग्लास होते हैं, शेल्स होते हैं, बॉटल्स होती है जिसके अंदर ब्लू कलर के जो है ना वो फ्लावर्स रखे हुए होते हैं, एंड द फ्रेंच कॉपर कॉइन्स, और फ्रेंच कॉइन्स होते हैं. Everything was arranged carefully. It showed how valuable the toys were to the boy. सारी चीजों जो थी वो बड़ी वैल्यू रखती थी उस बच्चे के लिए. These things were not extremely rare or precious, but for the boy, they had immense value. He had given several hours to find these items. उसने बड़ी मुश्किल से ये सारे आइटम निकाले थे, ढूंढे थे, और इन सब की बड़ी इंपॉर्टेंस थी उस बच्चे की नजर में. Whenever he was sad, he sought a solace in his toys. That's why when he went to bed on that night, he kept them close. वो जब भी परेशान होता था तो वो अपने इन टॉयज को निकाल कर देखता था. और उस दिन भी, उस रात भी यही हुआ कि जब उसके फादर से उसे डांट पड़ी तो उसने वो सारे के सारे टॉयज जो थे अपने बेड के करीब रख लिए. He knew others might cause pain to his heart, but these things would never do that. उसको पता था कि ये जो ह्यूमन बीइंग है कोई भी उसे तकलीफ पहुंचा सकता है, लेकिन ये जो मेरे टॉयज हैं ये मुझे कभी भी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे. In these lines, Petmore describes how children take pleasure in simple things that adults would find meaningless when they were kids. They did the same as grown-ups where they forgot how to cherish their simplicity and how to be content with less. Hence, they cannot even understand what is less valuable for them is precious for children. अब यहाँ पे जो पेट मोरस ने ये डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि चिल्ड्रन जो है वो हमेशा से प्लेजर चाहते हैं,
सिंपल थिंग्स चाहते हैं, उसकी कोई मीनिंग नहीं होती, कोई कंडीशन नहीं होती। लेकिन अगर वो फादर जो था वो भी तो पहले का भी बच्चा था, उसने भी तो सेम चीजें की होंगी, और जैसे जैसे वो बड़ा हो वो सारी चीजें भूलता चला गया, एंड देन कम टू दी सिंप्लिसिटी साइड। अब वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, दे कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड कि वी पीपल आरंट अंडरस्टैंड दैट हाउ वैल्यूएबल फॉर देम इज प्रीशियस फॉर चिल्ड्रन। जिस तरह हमारे टाइम में हम लोगों को टॉयज काफी पसंद थे, तो व्हाई नॉट एट दिस टाइम द चिल्ड्रन आर आल्सो लाइक द कॉइन्स। नाउ नेक्स्ट। Okay, another stanza. So when the night I prayed to God, I wept and said, Ah, when at last we lie with tranced breath, not vexing thee in death, and thou rememberest of what twice we made our joys. So here what we are talking about, that in this stanza, last section of the twice, Patmore describes the impression of the incident on his mind. On that night he returned from his son's room. He wept for his mistake and prayed to God for forgiveness. वो बड़ा मायूसी के साथ उस रात अपने बेटे के कमरे से बाहर आया और उसने फौरन ही अल्लाह से दुआ करना शुरू कर दी और माफी मांगने लगा। दिस इंसिडेंट मेड हिम सो मूव दैट ही थॉट ऑफ डाइंग फ्रॉम द पेन। उसको इतनी तकलीफ हो रही थी कि उसका दिल चाह रहा था मैं इस तकलीफ से बस खत्म हो जाऊं। द पोएट insinuates the fact in the line। क्या बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे पोएट पैट। When at last we lie with tranced breath, when one person is in half conscious state without having the ability to move or speak, he is in the state of trance. It occurs at the time of death। यानी कि ये सारी चीजें हमें उस वक्त रियलाइज होती है when the time has to come for death। कि how it is difficult for us to take the breath, how we are half conscious and unconscious, and we are not having any ability to react. So at that condition, we know about the value of a human being. The poetic persona did not wish to vex or complain to God in death, God being aware of the acts of children, क्योंकि अल्लाह ताला को भी मालूम है कि बच्चे ने अब क्या करना है और वो किस तरह की छोटी छोटी शरारतें करेगा। knows what toys made their choice, कि ये जो खिलौने बनाए हैं ये बनाए ही उनकी मतलब खुशी के लिए हैं। here the term toys is used to metaphorically hint the materialism of mankind। अब यहाँ पे इन्होंने जो टॉयज की बात की है ये सिंपली एक मटेरियल है, मटेरियलिज्म, इसीलिए इसको मेटाफोरिकली कहा गया, यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे हम बच्चे खेल सकें, खुश हो सकें। फेम, फेम यहाँ पे क्या कह रहा है, मनी एंड अर्थली सक्सेस बिकम द टॉयज ऑफ एडल्ट एज लॉन्ग एज दे हैव दीज थिंग्स दे रिमेन हैप्पी। By referring to the child's toy and the toy's adults, Petmore present the theme of innocence versus world lines। So here what we are going to discuss about the things that as long as we are using the things so that we are also happy। By referring to the child's toys, the toys of adults, Petmore present the theme of innocence and world। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, टॉयज एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, that if you want to become the happy so that we can also use it, and then what we are going to do uh, for the children, and they are very innocent and we should have to take them and we should understand that what do they want to do, next। Okay, now how weakly understood the great commanded good, then fatherly not less than I whom thou hast molded from the clay, though it will leave thy wrath and say, I will be sorry for their childishness।
So, whatsoever the speaker describes his ignorance and emotive terms, according to him, he weakly understood God's command. अगर उस वक्त उसको God's command याद होती तो उसका ये behavior ही ना होता अपने बेटे के लिए. He disobeyed his commandment throughout his life for not realizing their importance. God's words are for the collective goods of humankind, but very few of them are able to understand it. यानी कि उसने disobey किया throughout his life or he was not realizing the importance. Gods were are for the collective good human, क्योंकि gods के जितना कुछ है वो तो सबके लिए, कोई specific human being नहीं है, but very few of them are able to understand. लेकिन हम में से चंद लोग ऐसे हैं जो इस चीज को बहुत अच्छे से understand करते हैं. He became aware of his mistake after the incident. उसके बाद उसने बड़ी अच्छी तरह इसको understand किया कि मैंने अपने बेटे के साथ बहुत गलत किया, harsh behavior मैंने use किया. So that he said that God is the father of humankind, just like him. कि अल्लाह भी क्या है, एक तरह से फादर ही है जो कि सबको देख रहा है. But God is greater than him. लेकिन obviously अल्लाह ताला बड़ा है. We people are human being. He was the one who molded him from the clay and provided him spiritual nourishment to grow both inwardly and outwardly. यानी he is only the one who is only the creator कि जिसने हमें बनाया है, उसने हमारी nourishment की है either inside or outside. Yet he preferred the outward growth more than the internal one. यानी कि हमारी आउटपुट जो है, हमारा आउटवर्ड जो ग्रोथ है, इसको बहुत ज्यादा जरूरत है देन द इंटरनल वन. इंटरनल वन ऑटोमेटिकली, it means we will have to understand the other behavior, so automatically we do understand what do we want. Okay, next. Like the speaker was angry with his son, he thinks God might be the same with him as well as others. So he wished that he would not be angry with him. He would be sorry for the childishness of humankind. The last line of the poem contains an allusion to a biblical passage. So here what the speaker is discussing about that, उसको बड़ा अफसोस होता है कि उसने अपने बेटे के साथ कैसा बिहेवियर किया. और जब वो याद करता है कि अल्लाह ताला हमारी इतनी सारी मिस्टेक्स को माफ कर देता है, तो मेरा भी ये बिहेवियर अपने बच्चे के लिए नहीं होना चाहिए था. And then he didn't want to be angry with him anymore, and then this behavior is very harshly with him. And then the last line of the poem contains an allusion of a biblical passage. यानी हमें अपनी सोच के मुताबिक ही नहीं चलना चाहिए. We will have to convert the thinking because of the other's behavior as well. Now next. Next theme is the pet modes, the twice step or several. All right, so here we are going to discuss about the theme. Theme में भी हम वही चीज discuss करेंगे that either it could be in a nutshell that how he was behaving with his child. So what the pet modes was saying about the in this poem, the twice, that taps on several time themes. The most important theme of this piece are the father-son relationship. ये एक bonding होती है, ये बहुत strong relationship होता है father and son का. And worldliness. It also explores the themes of the childishness, commiseration, craving, and the benevolence of God and forgiveness. In this poem, Petmore shares an incident that happened with him. One day, he rebuked his son for not listening to him a couple of times. He became sad and wept alone. After discovering his child in grief, he realized that he had reacted harshly while he prayed to God on that night. He implicitly atoned for his fault. He became thoughtful of the fact that he was also attracted to the earthly joys. Hence, he wished God to forgive their childishness just like he forgave his son. Now, he was talking here about that either he has used the harshly behavior with his child, but on the other hand, he was just
talking to God and asking from Him that whatever the behavior or behaved by myself, so that I am now realizing that this behavior was very harshly. जिस तरीके से अगर वो अपने आप को मोटिवेट कर रहा है, अपने आप को देख रहा है कि अल्लाह ऑलमाइटी जो है, हम कुछ भी कर जाते हैं और अल्लाह ताला से जब हम दुआ मांगते हैं और सच्चे दिल के साथ हम जब दुआ करते हैं, सो व्हाट वुड हैपन विद अस, कि वो हमें जो है वो कि वो जो है उनका बिहेवियर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, एंड देन ही कुड अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स प्रॉब्लम। और फिर यहाँ पे तो उसकी बात हो रही है कि जिस बच्चे की मदर ही नहीं है, तो वो जो बच्चा है वो टोटली डिपेंड कर रहा है फादर के लव पे। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर उस फादर का ही बिहेवियर ऐसा होगा, सो दैट हाउ he was behaving and where he would have to go. So this type of condition we should have to understand, being a father, being a mother, that how do we have to treat with the children. Now next slide. All right. So here we are going to discuss that how to write down a summary. Before just discussing about the summary, I am going to tell you to hear that whenever you will start writing the summary, so that you will have to remember the whole poem. And then whenever you have to sum up the poem, so do remember that what are the conditions, circumstances, so that you will elaborate the poem. किस तरीके से वो एक strong stanza है जिसको आप लेकर एक समरी को बना सकते हो। ठीक है, तो आपने टॉप टू बॉटम यू विल हैव टू राइट डाउन जस्ट इन द फॉर्म ऑफ द स्टोरी। इट कैन बी डिस्क्रिप्टिव समहाउ, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि बाय यूजिंग आवर ओन वर्ड्स। So the twice begins with a reference to an incident that happened with the speaker or the poet. Petmore's poetic persona describes how one day he rebuked his son for the disobeying his order. He struck him with unkind words and refused to give him good night kiss. The boy's mother, being dead, could not comfort him when he went to bed with a heavy heart. Later, the speaker went to his room and discovered the twice of the boy kept close to his bed. These toys included a variety of objects that his son collected. He treasured them and took solace in time of need. On the same night, when the speaker went to bed, the toys reminded him of mundane things such as wealth, earthly success, fame, humans, duties. After these things, without heeding the ultimate truth, according to the speaker, God might not be angry with their ignorance, rather, he would forgive their childishness. So, do remember always that whenever we are behaving with the children, so that we should have to understand कि उस बच्चे की मदर नहीं है, वो कैसे जाके सोएगा बगैर मतलब फादर ने उसे प्यार नहीं किया, उसे ऐसे ही भेज दिया। सो दैट उसकी कंडीशन ये हो गई, ही हैज टेकन आउट द टॉयज। उसको ऐसे लगा कि ह्यूमन बीइंग से बेटर कौन होता है, टॉयज होते हैं, ये मुझे कहते भी कुछ नहीं है। सो दैट ही हैज टेकन आउट ऑल हिज टॉयज एंड देन ही वाज क्राइंग इनफ एंड देन ही वाज जस्ट प्लेइंग विद दोस टॉयज एंड देन during playing he has slept. So that should we have to keep it in our mind whenever we are just treating to the children, so that do remember they want love और उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, and we should have to provide to them. Next. Okay, here there are some questions which we are going to discuss about it. What is the significance of the toys in the poem? So in the poem the toys act as a metaphor. Metaphor के तौर पे यूज किया क्योंकि ये एक material है. Firstly, it refers to the simple that make a child happy. Then the poet uses it's a metaphor of the worldly toys that adults take a pleasure in. By this reference, he contrasts the innocence of a children with the world lines of the adults. In this way, the toys become an important element that helps reader to know what the difference between spiritual need and the mental greed. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले तो टॉय से ऐसे खेल रहे, जब उसका फादर उसे लाइक करता है, पसंद करता है, उसके दिल में क्या है कि वो एक नॉर्मली उसका बिहेवियर एक नॉर्मल है, लेकिन जहां पे उसे परेशानी हुई उसके बिहेवियर फादर का बिहेवियर टोटली चेंज हुआ, सो दैट द वो जो टॉयस है वो उसे मेंटल भी रिलैक्स करने लगे, उसको लगा कि मेरे साथ कोई ऐसा है, इफ माय फादर इज नॉट विद मी।
On the other hand, we are going to discuss about, do you justify the father's action in the poem the twice why? अब इस ट्वाइस पोएम में आप क्या जस्टिफाई करते हैं उसका जो रिएक्शन था फादर के लिए? अगर हमसे कोई बदतमीजी करेगा ऑब्वियसली का हमारा रिएक्शन भी माइट भी ऐसा हो. सो लेट मी सी, टू जज अनदर पर्सनस फॉल्ट इवन आफ्टर बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट वी ऑल्सो डू मेक मिस्टेक्स. हमें पता होती है रियलिटी लेकिन उसके बावजूद हम क्या करते हैं, मिस्टेक्स कर जाते हैं. इज नथिंग बट अ वे टू शो हाइपोक्रेसी. हम बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता आइदर वी आर डूइंग द राइट थिंग्स और द रॉन्ग थिंग्स. In this poem, the father's action can be justifiable on three terms. Firstly, he was kind to the child when he made mistakes. Secondly, his father's duty to guide his child. हमें सबसे पहले उससे नरमी से बात करनी चाहिए. And this is the father's duty to guide, क्योंकि father को fact पता है कि इस बच्चे की mother नहीं है. Thirdly, क्या होना चाहिए? He was there to console his son. Even though he had to rebuke his son for his attitude, he realized that he was too harsh with him. This realization justifies the fact that he did the right thing. तो फादर को बहुत अच्छे से अपने बेटे को समझना चाहिए कि मेरा बेटा आखिर चाहता क्या है, वो किस चीज की मुझसे जिद कर रहा है, उसके बाद उसको रिएक्शन शो करना चाहिए. नेक्स्ट, yeah, what is the substance of the poem? The twice this poem describe an incident that happened with the poet. One day rebuked his son for disobeying him. जाहिर बात है फादर था, उससे मतलब अपने नॉर्मल स्टाइल में बोल गया जिसको उसके फादर ने नोट किया कि ये मुझसे बदतमीजी कर रहा है. His sad son's face brought about the pet in him. It reminded him that the faults of human commit by not listening to God's commandments. ऐसा क्यों हुआ? Because he was not listening to the God. What was the, अगर हमें अल्लाह ताला का याद हो कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से कहा है कि we should have to behave good ones so that we will not do this type of mistake. What was the child's mistake in the poem? The twice. The child disobeyed his father. It seems his father had some issues regarding the twice he collected. ठीक है, जब उसके फादर ने गुस्सा किया तो उनका मकसद ही ये था कि ये मुझे अपने ट्वाइस की वजह से परेशान कर रहा है, और फिर उसको उन ट्वाइस पर भी गुस्सा आने लगा जिससे वो बच्चा खेला करता था. He might have warned him to waste his time in finding such meaningless item. और वो उसको कहने लगा कि भाई मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं लगती है, why you are just finding these type of items जो कि तुम्हारे लिए यूजलेस है. What message does Coventry Patmore give us in the poem The Twice? Through this poem, Patmore advises grown-up readers. हम लोगों को ये मैसेज है Patmore की तरफ से, that focus on the things God. सिर्फ अल्लाह ताला की चीजों पे ध्यान दो. The father of all told them to do. He commanded men to follow his path for their good. Besides this piece also conveys the message of being kind and children and forgiving their silly mistakes. कि मतलब we should have to understand what the Allah Almighty has said to us. Accordingly, we should have to respect the children and then we should have to behave in a polite way. So that if we do remember these type of things, so that we never ever misbehave with the children, that is very much, this is very very bad for us as well, that how do we have to treat the children. तो यहाँ पे उसने रिलीजियन को टच करते हुए कहा है कि जब अल्लाह का ही हुक्म नहीं है कि हमें इस तरीके से बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए, so who we are, we should have to understand the psyche of the student, the background of the children, so that according to that we should have to behave. और अगर आप politely उस बच्चे को समझाएंगे तो automatically this is the fact that the children can do understand. Next. Okay, now what religious lesson did the poet draw from the incident, the twice? After the incident, the poet realized the mistakes human beings, including him, commit as adults by heeding the advice of God. They chase after the worldly twice without caring much about the spiritual lesson taught by Almighty. However, in the end, he wished God to forgive his flaws just as he did with his son. एंड में जब वो अच्छी तरह रियलाइज कर लेता है अपनी मिस्टेक को, तो वो अल्लाह ताला से बहुत माफी मांगता है कि नेक्स्ट टाइम उसका बिहेवियर अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं होगा. What incident did the poet describe in this poem the twice? Incident क्या था जो डिस्क्राइब किया था? Very easy. In this poem the Patmore describes how one day he rebuked his son for disobeying his word. मतलब एक बच्चे को शुरू से लेके उसने इतना बड़ा किया बच्चे को, और एक जरा सी मिस्टेक की वजह से that he was finding the twice and which is irritating the father, that because of the twice he was just misbehaving with me. The child's grief caused pain to his heart. यानी कि उसने इतना परेशान कर दिया अपने बच्चे को गुस्से की वजह से
कि वो बच्चा जो था उसका इतना दिल दुखा and he started to cry. It reminded him of his own fault of being disobedient to God's words. यानी कि रिमाइंडर है अल्लाह ताला की तरफ से that कि वो जो है it reminded him of his own fault कि if you have done something wrong so that you will have to remember that you have done the wrong things. Being disobedient of God's words. तो हमें अल्लाह ताला के वो अल्फाज याद रखने चाहिए, वर्ड्स याद रखने चाहिए that how do we have to behave with the children. Next. Okay, thank you so much. The lecture has been ended up now. Tomorrow we will discuss or I will come with another lecture. So thank you so much. Allah Hafiz.